Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sansad Television. Let us first begin with the headlines. Lok Sabha passes the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 after discussion. Bill to strengthen cooperatives by making them transparent. Biological Diversity Amendment Bill 2022 also passed in the lower house. Parliament passes Constitution Scheduled Tribes Order 5th Amendment Bill 2022. Bill to include communities in ST's list of Chhattisgarh. Bill passed in the House by voice vote. Both houses of Parliament adjourned for the day following disruption. Phangnom Konyak becomes the first woman member from Nagaland to preside over Rajya Sabha. Parliament on Tuesday passed a bill to include communities in the list of scheduled tribes in Chhattisgarh. The Constitution Scheduled Tribes Order 5th Amendment Bill 2022 was passed in the upper house through a voice vote. The Lok Sabha had cleared the legislation in December 2022. Replying to the debate on the bill, Tribal Affairs Minister Arjun Munda said the bill will benefit around 72,000 people in Chhattisgarh. सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला में इस बात का उल्लेख किया कि किसी भी ऐसे मामले पर संसद को यह अधिकार है कि इस पर किसी भी तरह का यदि त्रुटि है तो पार्लियामेंट संसद इसका संशोधन करे। और इस दृष्टि से उसके बाद कई वर्ष बीते, लेकिन इस पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पूर्ववर्ती सरकार ने ध्यान नहीं देने के कारण परिस्थितियां जटिल होते चली गई। लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो संवेदनशीलता के साथ संवेदनशील सरकार होने का परिचय देते हुए ऐसे मामले को, और जिन राज्यों का हमने उल्लेख किया, अरुणाचल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और कई राज्यों का, सभी राज्यों का समाधान करने का कार्य प्रारंभ हुआ। पिछले सत्र में भी हुआ, इसके पहले भी हुआ, और यह क्रमवार, इसके बाद हम हिमाचल के बारे में चर्चा करेंगे। तो लगातार हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो इसे एक बात जो स्पष्ट दिखती है, सरकार की संवेदनशीलता ट्राइबल के बारे में, जनजातीय समुदायों के बारे में, उनके संपूर्ण यानी उनके जीवन के बहुआयामी व्यक्तित्व को उभारने के लिए मौलिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए, संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाने का काम कैसे हो, इस सरकार की मंशा है। Taking part in the discussion, Niranjan Bishi of BJD supported the bill, saying it will be beneficial for the tribals of Chhattisgarh. Saroj Pandey and Kirori Lal Meena of BJP also took part in the discussion and highlighted the steps taken by the government for the development of the tribals across the country. पूरे 20 साल संघर्ष के बाद मैं ये सौरा, भारिया, भुइया, पांडो, धनवार, गदवा, गढ़, कंद, कोड़ाकू, धनगढ़, किसान, नागेशिया, बिंझिया भारत के संविधान द्वारा स्थापित अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ लेने जा रहे हैं। मैं भी 2011 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो आंदोलन हुआ था, ये आदिवासी कम्युनिटी को शामिल करने के लिए, उसमें मैं शामिल था। और आज मैं ये बिल को पास करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। नए भारत में नई संभावनाएं हैं और ये नई संभावनाएं ऊंचाई की ओर बढ़ रही हैं। अगर ये ऊंचाई की ओर बढ़ रही हैं तो उसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने एक मजबूती और सक्षम नेतृत्व के साथ साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचय दिया है। उन्होंने उस समाज को उसका अधिकार देने का प्रयास किया जो हमेशा से वंचित रहा है। जब जब भारत के इतिहास की बात होगी
बिना आदिवासी समाज के, उनके संस्कारों के, उनकी संस्कृति के हमारा इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा। We wholeheartedly support this bill because the tribals anywhere in the country, irrespective of the state where they are located, and if tribals are benefited, YSRCP is for tribals and it will support every action of the government, any government, whether at the center or at the state, extend the support in wholeheartedly in full manner. Sir. जो होता है मृदुभाषी वो होता है आदिवासी। उत्तर प्रदेश में है काशी, उत्तर प्रदेश में है काशी, लेकिन मैं हूं महाराष्ट्रवासी। तो ये जो बिल है, ये बिल बहुत सारे जातियों को ट्राइबल में लाने का बिल है और हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, ये सरकार सामाजिक न्याय का विचार करने वाली है। दलित आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा न्याय देना चाहिए, भूमिका लेने वाली हमारी सरकार है। Marking a significant moment in parliamentary history of the country, the first woman member from Nagaland in the Rajya Sabha, Phangnom Konyak, presided over the House today. Earlier, she had created history by becoming the first ever woman member to be appointed to the panel of vice chairpersons on July 17, 2023. In a remarkable move to bring about gender equality, the Rajya Sabha chairman, Jagdeep Dhankar, last week had nominated 4 women members to the panel of vice chairpersons. It is also noteworthy that all women members nominated to the panel are first-time parliamentarians. Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar asserted on Tuesday that question hour is the heart of parliamentary procedures. He noted that it is important to fix the accountability of the government and urged all sides to engage in meaningful discussion. Question hour is the heart of parliamentary working. Because of question hour generates accountability and transparency. Question hour permits every member of the House to seek answer from the government. The question hour is helpful to the people at large. Question hour is important for the government also because government gathers input and response. Jagdeep Dhankar conducted the question hour amid din. Questions were raised over increase in prices of drugs and review and implementation of Mudra Yojana, among others. Whether steps like essential drugs will affect the price control in place of essential medicine and steps taken by the government to maintain affordability of these drugs in the interest of the patients, and how many Jan Aushadhi shops has been opened in India. जहाँ तक माननीय रमेश जी ने चिंता व्यक्त की है गरीबों को सस्ती दवाई मिल सके, इस अवसर पर मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि 9,512 जन औषधि केंद्र पूरे हिंदुस्तान में खोले गए हैं जिस पर जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं और बाजार की तुलना में 50% से लेकर के 90% तक लोगों को उसमें बचत होती है। और केवल 2023 में चेयरमैन सर 679 करोड़ रुपए की जो बचत हुई है और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसका लाभ लिया है। सभापति महोदय, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है जिसके आधार पर सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में क्या जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों की रहन सहन पारिवारिक स्थिति भिन्न है, इसलिए मुझे लगता है कि जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। NFHS डेटा जो है वो एक क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता है जो कि प्रोग्राम चल रहे हैं हेल्थ सेक्टर में किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर भी करता है। और ये NFHS डेटा जो लास्ट ईयर का 1921 का हुआ है वो 707 जिलों में हुआ है और जिसमें कि सभी क्षेत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए सर्वे होता है जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी होते हैं।
Share of taxes collected from the tobacco and allied products in the gross tax revenue of government for the financial year 2022 and 23. जो 21-22 तंबाकू और उत्पादों में जीएसटी, प्रस्तुति कर, उपकर मूल्य तथा उत्पादक शुल्क एनसीडी लगभग 62,600 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था और 22-23 में 72,789 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो कुपोषित बच्चों का प्रतिशत है वो राष्ट्रीय प्रतिशत से ज्यादा है, तो क्या उनके लिए कोई विशेष योजना चलाई जाएगी? सर, हम कुपोषण को लेके बहुत ही गंभीर रूप से सरकार का ध्यान है और काम भी कर रहे हैं। सर, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माता को उपलब्धि की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना हो या जननी शिशु सुरक्षा योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से, ताकि पहले ही वो डायग्नोसिस हो कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है, तो माता और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर अनेक योजनाओं के माध्यम से नरिशमेंट के लिए भी ध्यान रखते हैं। सर, पोषण अभियान के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट भी चलाई जाती है। तो हमारी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के माध्यम से भी उनको न्यूट्रिशनल का कंसेप्ट दिया जाता है। कृषि बीमा योजना में राजस्थान में बहुत जबरदस्त घोटाला है। किसानों को पर्याप्त कृषि बीमा नहीं मिला, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी कमेटी वहां भेजें जो जांच करे कि किसानों के बीमा के नाम पर जो ठगी हो रही है उसमें कार्रवाई की जा सके। मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसान फसल योजना जो है, जो योजना बीमा योजना जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को पैसे मिल रही है, राशि मिल रही है। इतना ही नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अच्छे तरह से जो रजिस्ट्रेशन किया है उनको पैसा मिलता है, लेकिन इनके साथ जो किसानों को जो राहत मिल रही है, जैसा किसान क्रेडिट कार्ड हो, बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद मिलती है, बाद में इनाम के भी मिलते हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो अलग अलग स्कीम के माध्यम से किसानों को मदद हो रही है। During the question hour in Rajya Sabha today, written replies were given by the concerned ministries to several questions. CPI-M MP Elamaram Karim asked whether the government is planning to privatize or disinvest any of the central public sector undertakings in the country. In her reply, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, government follows a policy of disinvestment through minority stake sale and strategic disinvestment. She said the Cabinet Committee on Economic Affairs since 2016 has given in principle approval for strategic disinvestment of 36 cases of PSEs and or subsidiaries units, joint ventures of PSEs banks. Rajya Sabha witnessed moment of wit and humor on Tuesday as the chairman sought to use laughter to cool down tempers. Catch these glimpses. मैं जब बात कर रहा हूँ, I am on my own leg and यही बोल रहा हूँ on my own leg. मैं हूँ तो Sir, the entire world knows you are on your own leg. नहीं Sir, you have proved it. ये क्यों? Sir, you have proved it. You are on your leg, literally and figuratively. Time for a very short break in the bulletin. News from the lower house on the other side. विशाल भारत को देखने के लिए आज दुनिया उत्सुक है। भारत के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ देने के लिए है। Welcome back to House Highlights. Let us now have a look at the proceedings in the Lok Sabha. The lower house today started amidst constant opposition sloganeering. The speaker instructed for the question hour to begin. However, as the house was not in order, the speaker appealed for members to go back to their respective seats and let the house function smoothly. The opposition, however, continued to create impasse and the chair was forced to adjourn the house.
आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल जैसे समय का आप उपयोग नहीं करना चाहते। इस समय महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलाएं, सदन पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा करें, सरकार की जवाब देते करें। एक अच्छे प्रयास की कोशिश करना चाहिए। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या रोज नारेबाजी करते हैं आप? नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलना। आकर आइए, अपनी अपनी सीट पर विराजे। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, संसद की गरिमा को बनाए रखें। रोज प्ले कार्ड लाना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, संसद की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Important legislative business were taken up after the House reassembled at 2 p.m. The House took up the Biological Diversity Amendment Bill 2022 as recommended by the Joint Parliamentary Committee for discussion and passing. Environment Minister Bhupendra Yadav moved the bill further to amend the Biological Diversity Act 2002. I move the Biological Diversity Amendment Bill 2022 as reported by the Joint Committee on the Biological Diversity Amendment Bill 2021 to be taken into consideration. I also to move the bill be passed. Amid many members took part in the discussion. The minister also replied, after which the bill was passed by a voice vote. 2002 में जो जैव विविधता संशोधन बिल आया था, वह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लेकर के एक नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था कि जिन स्थानों पर जो चीजें निकलती हैं, उगती हैं, जो चीज उनके हर इस स्थानीय इलाके की जो खासियत है, उसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए और उसके साथ वो चीजें सभी के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान में रख के एक नगोया प्रोटोकॉल हुआ था और उस पर भारत भी उसका सिग्नेटरी है। लेकिन 15 वर्षों में कुछ राज्यों ने बायोडाइवर्सिटी लॉ का, खास करके स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो थे, उन्होंने बहुत ही गलत फायदे भी उठाने शुरू किए। JPC, a joint parliamentary committee, had been constituted and I had the privilege of being its members. This JPC went for a meticulous exercise and asked for suggestions from all stakeholders, both government and non-government, before finalizing the amendment bill and sending the same to this August House for ratification. Sir, I must say that India has been a signatory to the UN Convention on Biological Diversity 1992 and the Nagoya Protocol. And in line with these international instruments, we are supposed to bring in certain changes in the Biological Diversity Act 2002. And that is why we are here today to discuss all the amendments that have been proposed after meticulous exercise by the Joint Parliamentary Committee. The government should take necessary steps for the negative points. No definition of codified traditional knowledge. Sir, the bill exempts users of codified traditional knowledge from benefit sharing with local communities. But this term has not been defined. Neither it has been defined the Convention on Biological Diversity Nagoya Protocols. Such a gap might exempt almost all traditional knowledge for the benefit of sharing requirements which counter the productive. हमारे देश में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय बना और आयुष मंत्रालय में निश्चित रूप से
बायोडायवर्सिटी के पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए और भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके लिए कार्य किया गया। और इसलिए इस क्षेत्र में अनुसंधान हो, इस क्षेत्र में सहयोग हो, इस क्षेत्र में एकेडमिक सहयोग हो, इसके लिए इस बिल में अमेंडमेंट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने डीक्रिमिनलाइजेशन करके कम से कम आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको राहत दी है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का जो माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य इस बिल के अमेंडमेंट के द्वारा किया जा रहा है। When the House reassembled after another adjournment at 5 p.m., the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022, as reported by Joint Committee, was taken up for discussion and passing. Cooperative Minister Amit Shah moved the bill to further amend the Multi-State Cooperative Societies Act 2002, as reported by the Joint Committee. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पर विचार किया जाए। Cooperative Minister moved the bill. Members participated in the discussion. Minister Amit Shah also replied to the queries and the bill was passed by a voice vote. छोटे किसान, गरीब और गांव और छोटे व्यावसायिक जिनका प्राण रहे हैं, ऐसी सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने के लिए ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल को लाया है। 8 लाख के करीब कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां इस देश में है। 1600 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सहकारी मंडलियां पूरे देश में है और जिसमें से 570 जितनी बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र जैसे राज्य में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस क्षेत्र की महत्व को समझा। Section 63 of 63A, sir, with respect to new addition of 1% for sick corporations, sir. Already from profits, 25% is tax, sir. Another 25% is used as statutory reserve, sir. 10% is used as a bad debts reserve, sir. And 1% is education. On top of that, this is almost 61%. And on top of that, another 1% is being levied for the sick corporations. So I hope that you find some creative method so that we bring this 1% from some other ways rather than actually taxing again the cooperatives for the sick corporation funds, sir. मैं इस महान सदन के सामने एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आया हूं, जो न केवल बहुराज्यीय सहकारी समितियां, परंतु इसको एज अ कंसेप्ट स्वीकार करते हुए प्राथमिक सहकारी समितियां और राज्य की सहकारी समितियों में भी एक प्रकार के संस्कार और कार्य संस्कृति का निर्मित करेंगे। During the question hour, question numbers 61 to 80 were scheduled to be asked in the Lok Sabha on Tuesday. The ministries involved in today's questions were the development of the Rural Development Ministry and Information and Broadcasting Ministry, Agriculture and Farmers Welfare Ministry, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Cooperation, Youth Affairs and Sports and Social Justice and Empowerment. INC member Gaurav Gogoi was one of the MPs who had asked the first question for the day related to rural development. His question related to deletion of names under MGNREGS. He wanted to know whether it is a fact that names of nearly 1 crore workers have been deleted under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, citing various reasons. If so, the details thereof and the reasons therefor state-wise. To which Minister of Rural Development Giriraj Singh has replied, stating 5 reasons for the job deletion cards. Fake job card, incorrect job card. Second, duplicate job card, person now not willing to work.
And the fourth reason being family shifted from Gram Panchayat permanently, and the fifth reason being single person in job card and the person is expired. The minister has also explained that updation of job cards is a regular exercise conducted by the states and UTs. INC member Manish Tiwari's related to the Ministry of Information and Broadcasting on the empanelment of social media influencer marketing agencies. He wanted to know whether the government has any plan to ensure fair and revenue distribution, prevent social media space monopolization with the increasing reliance on influencers for the government advertising, and if so, the details thereof. A written reply, Minister of Information and Broadcasting Anurag Singh Thakur has said, Central Bureau of Communications, CBC, under the Ministry of Information and Broadcasting undertakes campaigns relating to publicity, awareness, generation of programs, schemes of Government of India. For this purpose, the CBC has placed transparent policy guidelines for empanelment of media agencies and release of advertisements and other promotions on media platforms, including for digital media and social media. That's all we have in today's House Highlights. Keep watching Sansad Television.